everyone, myself Rajpira Kaur and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. Today is 11th February. It's the day for youngster. You can easily understand what I want to say. It's the promise day for youngster. Usually they make promise to their beloved ones. But being young, I think I have some promises to keep before I sleep. I have some promises towards my country not to be broken as is done by most of the leaders. I have promises to protect the environment from pollution so that every human being on this earth can lead better life, can breathe in fresh air, can drink pure water, can have a healthy life, cannot be washed away by the river. I have the promises to my sister and my daughter to avail them such a society where none can trouble for dowry, none can murder for not carrying their order for illicit relationship, none can use them for their own political mileage, where none can compel them to be burnt. I have some promises toward farmers who feed us the cost of unimaginable hardship during the winter, summer, or rain. I have some promises to protect their right of life, right of their land. I remember some lines of a poem in Hindi written by Ramdhari Singh Dinkar. रोटी उसकी जिसका अनाज जिसकी जमीन जिसका श्रम है, अब कौन उलट सकता स्वतंत्रता की शुद्धि सीधा क्रम है। आज़ादी है अधिकार परिश्रम का पुनित फल पाने का, आज़ादी है अधिकार शोषण की धज्जियां उड़ाने का। I have some promises to protect the right of freedom, which means freedom of speech ending the exploitation, freedom to express। आजादी है अधिकार खोज की नई राह पर आने का, आजादी है अधिकार नए दीपों का पता लगाने का। I have some promises for farmer not make barricades for them in their own country to stop their movement. Surely there will be barricades on the border of our country so that none can take a single inch of land of our country. I have the promise to protect democratic values of the country based on scientific reason. I do support this statement of Greta Thunberg. She has rightly said science and democracy are strongly interlinked as they are both built on freedom of speech, independence, fact, and transparency. If you don't respect democracy, then you probably won't respect science, and if you don't respect science, then you probably won't respect democracy. In the end, I have promises for my beloved. Please stay नमस्कार with दर्शक us बंधुओं, to प्रॉमिस have डे की some आपको तो word बहुत from बहुत our शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। associate editor Rohit प्रॉमिस डे Mohankar. सेलिब्रेट किया जाता है या प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस हम लोग अपने लोगों से, अपने प्रियजनों से बहुत कारण से करते हैं, बहुत अलग अलग प्रॉमिस करते हैं। यूएस के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने
अपने युवा भाइयों को एक बात कही थी कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि देश आपके लिए क्या करता है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने देश के लिए क्या करते हैं। तो प्रॉमिस डे के दिन हम लोग भी अपने देश के लिए एक प्रॉमिस ले सकते हैं कि अपने देश की जो संविधान है उसका मूल्यों की रक्षा हम लोग कैसे कर सकें, अपने संविधान की जो संप्रभुता है उसको हम लोग कैसे बना के रख सकते हैं और अपने देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं, नई ऊंचाइयों में कैसे ले जा सकते हैं। तो हम लोग सबको मिलकर एक प्रॉमिस लेना होगा कि अपने देश को हम लोग नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो मैं अपने वक्त को विराम देता हूँ इस लाइन के साथ कि हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। नमस्कार। One young girl, Sirijani Ghosh, has shared her views. The value of a country is assessed not by the riches or assets it possesses, but by its people. A nation may be wealthy, but what's more important than the actual wealth is the collective intellect and intelligence of the people. The youth of a nation determine how it shapes up a few years in the future. They are the future of the country, and their actions and inaction both contribute to the state of the nation. In developing and promising countries like India, the youth of the nation can contribute to the growth by exercising their franchise. India is proud of the fact that she is the world's largest democracy. But if the country has to be governed properly, it has to be done by people who are responsible and who don't abuse their positions of power for their own betterment. Bringing in positive change. India is plagued by various social ills, like corruption at higher levels. Politicians win so much red tape around simple processes that they complicate them and make it impossible for progress to take place. Using that education for the good of the country. Countries develop and become better when more of their youth are educated, and when this education is used for the greater good of the nation, India is leaping ahead of most other nations in terms of infrastructure and opportunities. But the basic mindset of the people is yet to change. They still don't know how to adhere to basic societal propriety, like following traffic rules or keeping to a queue and waiting their turn. They must strive to get people to follow the lead instead of following hard mentality and joining the majority. Arunbha Hi everyone, Samanta, a very happy Promise educationist Day and to all our success viewers. coach, has Now promise also has few words too on many this significance promise in day. everyone's life. We make promise, we keep them, and it has got different importance for everyone. But I was just thinking, what is the most important promise in someone's life? And I guess the most important promise for someone is the promise which he or she makes to her own nation. So on this auspicious day, let's come together and make a promise that we will uphold the values which are enshrined in our constitution, and we will protect the rights which this grand nation, this fabulous nation gives us, and we all will live here with a sense of brotherhood and fight for those values for which our forefathers, the freedom fighters, have given their life. So once again, happy Promise Day to all our young audience. Thank you. For Another their country, person, MD to Khalid, target has the youth to think expressed about their his nations. views on Yes, the I Promise have Day like reactions this. on it. Because currently, what should I observe through the social media? It hurts me a lot, I think, as a youth. So let us first understand the meaning of the youth. The youth is not only relates to your age, but it reflects the action which is full of the enthusiasm and the confident. But unfortunately, we the people of Indian youths considered only ages but not the actions. How do I defend my above comment? The very obvious answer to seeing the current situation of the Kisan Andolan, who is there, and what our youth comments and reacts on the social media. It is very sad to say that not all youths of our country understand the valuation of this Andolan. Even some youth says against the farmers in support of their surveyor, but they forgot to understand in biology what we studied. Only plants are producers in ecosystem of living organism, like that only the farmers the producers in society of the ecosystem. Therefore, the youth must be promised towards their nations, towards their nation, but not to their PM. Youth must understand the PM is accountable
to the democratic republic countries, country, and the accountability is depends on questions. So I, as a youth, keep promises to myself, being accountable to my promises, to my questions, towards the systems, and this is I need to all youths. I request to all youths to ask the questions, promises to take to ask the questions to the systems. Thank you. Let us नमस्कार। have some advice मैं of विकास our प्रसाद working एकता editor प्राथमिक Sri विद्यालय Vikas एंड Prasad जूनियर हाई on स्कूल का this day. प्रधानाध्यापक देश के युवाओं से ये आह्वान करता हूं कि गुरुवार प्रॉमिस डे के अवसर पर देश के युवा अपना स्वार्थ, परिवार स्वार्थ और समाज स्वार्थ का त्याग कर देश स्वार्थ में और हित के लिए कर्तव्य करने का प्रॉमिस करें, ताकि देश के साथ ही साथ देशवासियों और हम सबका कल्याण हो, भला हो। धन्यवाद। Chair Mr. Gulnaz Parveen has rightly said. मैं गुलनाज परवीन, पेशे से एक मालिमा। आज प्रॉमिस डे है, तो आज मैं हमारे नौजवानों और हमारे देश को कुछ मैसेज देना चाहूँगी। जैसा कि प्रॉमिस डे, इस दिन यूथ्स अपने चाहने वालों के साथ कुछ अनब्रेकेबल प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन क्या वो उन प्रॉमिसेस को फुलफिल कर पाते हैं? क्या वो अपनी स्टडीज़ को जब मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें आसानी से नौकरी मिलती है? क्या वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मन चाहे रास्ते पे चल पाते हैं? नहीं। अगर हम इन सवालों का जवाब तलाश करें तो हमें पता चलेगा कि हकीकतन कुछ और है। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की भाग दौड़ हमारे हाथों से निकल चुकी है। हम स्कूलों और कुछ अदारों पर अपनी मुस्तकबिल को मुनहसर कर दिए, जिससे नौजवानों के अंदर जो आग होनी चाहिए अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए, वो आग नहीं है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन अदारों में दिए जाते हैं, स्कूलों में दिए जाते हैं, वो उन्हें बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे पूरा करते रहते हैं। यहाँ तक कि हम जिस जगह काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ भी हमसे बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे ऐसी कारकर्दगी ली जाती है जिनके बारे में हमें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अगर जब हम उनके उसके बारे में अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो हमारे साथ बदसलूकी की जाती है, जो कि हमारा किसी भी चीज़ के बारे में जानने का पूरा फंडामेंटल राइट्स है। हम उसको जान सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद भी हमारे साथ बदसलूकी की जाती है। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं हमें, ये सिर्फ किताबों तक महदूद रह गए। रियल लाइफ में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। Dhanbad Jubair Alam. Two criminals riding a bike near Dhanbad court, a few steps away from office of preferred superintendent of police, target a retired policeman. The criminal snatched a bag full of rupees from hand of retired policeman and felt there was 1 lakh rupees in the bag. The victim has logged a complaint with the police of Sardar police station. Only shop in Asansol, which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra, which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301. And you have also call on the number 0341 2305 and another mobile number is 9547356154.
and they have the unique tasty products meethi khakra, masala khakra, sadda khakra, Manchurian khakra, cheese khakra, Maggi khakra, chaat masala khakra, mithia khakra, banana chips. Surya, February 10. Ispat Damodar Private Limited Worker Union applicated to BJP Worker Organization National Front of India. Trade union in front of Ispat Damodar Private Limited factory of Manji Group of Company Limited located near Naugram under Diga Gram Panchayat of Kituria block of Purulia district. গেট মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছে ইস্পাত দামোদর প্রাইভেট তা বলতে কিছুই নেই, অথচ আপনার গেটের বাইরে গেট দিয়ে চকচক, যাতে টিভিতে দেখা যায় ইস্পাত দামোদর প্রাইভেট লিমিটেডের গেট কিন্তু চকচক, ভিতরের পরিবেশ যদি ঢুকেন তো শ্রমিকের সোজা হয়নি, শ্রমিকের জলের ব্যবস্থা নেই। বাহ, এখানে সমস্ত রাস্তা দিয়ে যে সমস্ত মানুষ বাইরে পার হয়ে যাবে, দেখবে যে ভাই প্লান্টের গেটের বাইরে চকচক হয়, তাহলে প্লান্টের ভিতরে চকচক আছে, ওয়ার্কারও চকচক আছে, কিন্তু চকচক কারা আছে? টিএমসি Of Barabani block, there are 7 Naga Baba Sadhu at the Vanora Kali temple tomorrow evening. As soon as they arrive to the village, villagers out overflow to see what kind of Sadhu Baba they are not wearing, but it is so cold, and this morning they left there towards Kolkata Kalighat and heard from their mouths that we are from Haridwar. We will go from here, we will breathe and worship at Kalighat in Kolkata, then we leave again. আমরা সব নিজের মেয়েছেরা এগুলো খারাপ লাগে না। 7টার সময় আসার কথা, কালকে বললাম না 7টার সময় আসবো। তাহলে सनातन धर्म है, न मिटा है न मिटने वाला है, और मिटाने वाले चले गए प्रभु का खेल निराला है। भाई है कि नहीं है? धर्म से जुड़े रहोगे, धर्म की जीत होती है। कहते हैं धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। अपन तो लोग प्रचार थोड़ी करते हैं, क्यों? इसके बाद क्या बोलते हैं, अगरबत्ती मंगा दी, तो आप लोगों को परस्पर देखा जाएगा। Vidhan Upadhyay MLA of Barabani inaugurated a group of project of Jam Gram Panchayat and Patura Gram Panchayat. Vidhan Upadhyay is the MLA of Barabani. 18 বছর থেকে 40 বছর যদি কোনো মেয়ে বিধবা থাকে তারও এই পাড়াটা কে দেখে পার্টি পেনশন দিচ্ছে, কন্যাশ্রী দিচ্ছে, রাস্তা দিচ্ছে, দুদিন থেকে ঢুকছে টাকা। পেনশন কাকুরা পেনশন পেয়েছো? না, আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। ইসি এলাকা দিও, তাহলে হবে। ইসি এলাকা দিতে হবে। দাদা একটু তারপরে আমি ভাবছি পূজা কই আসুন ইয়া সুকুমার
কই আমাকে বললে একটু পরে যাও কাপিসটা বলে নেব 60% দিতে বলি তোমার ঘর ঘর দিবি ভালো হয় সবাইকে দেখতে দিতে আমাদের করে কাজ শুরু করবি কিছু বলা আছে তো বলো দুপুর আমি বাড়াবো দেখতে ভালো লাগে তুমি ইঞ্জিনিয়ার কষ্ট করে কাজটা করতে দাও Barabani, the CPIM Women Association held a protest rally, and the CPIM Women Association and Lal Bazar police were present at the Barabani Damari Bazar today to protest against the use of Lal Bazar police presence. এবং মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে আমাদের এই আইন অমান্য কর্মসূচি ছিল। তো সেখানে আপনারা অনেকেই পেপার পড়েছেন, যে কালকের ঘটনা দেখেছেন, যে মহিলারা মিছিল করে ওই মাঠ ধর করে হুমকি দিয়ে বাড়ির থেকে ঘর ছাড়া করেছিলেন। আজকে অনেকেই সাধারণ মানুষ যারা আছে তারা বুঝতে পারছে যে এই সরকারের On behalf of the Department of Official Language on Official Language workshop was organized in the mechanical section of the Coke Oven Department under the chairmanship of Samir Kumar Das. Month manager, 10 dignitaries delegates participate in the workshop official language. Sri C.N. Pathak also conducted information and practice related to official language. The program was conducted with a memorandum of thanks from Mr. Deepak Naresh Dhote and Mr. Dilip Yadav, Office Superintendent. Dhanbad Howrah Dhanbad Superfast Train running. Asansol, February 10, 2021. For the conveyance of passenger, the Eastern Railway will run a fully reserved daily superfast special train between Howrah and Howrah 03388. Dhanbad Howrah Superfast Special Train will open daily from Dhanbad station 16:20 till next order from 13/2/2021 will reach Howrah at 21:20 on the same day. This train will reach Asansol station 17:34 and will open 17:37. তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থায় এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে, সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদেরকে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সকলে এসে এখানে বসতে বাধ্য হয়েছে। তারা এমনি দুপুরবেলায় তাদের মজা করতে এখানে এসে আসেনি। Thank you.
যারা আছেন, কর্মাধ্যক্ষরা আছেন, আমার জেলা কমিটি মহিলা জেলা কমিটি জেনারেল সেক্রেটারি সুজাতা বাসু সরকার আছে, আমার পঞ্চায়েত সমিতি গুড্ডুল হাজরা থেকে শুরু করে আমার যারাই আছেন প্রত্যেকের নাম হয়তো আমি বলছি না। প্রত্যেক নেতৃত্ব যারা আছেন, যারা পদাধিকারী আছেন, প্রত্যেককে সম্মান জানাই এবং जोरदार पहले दिल्ली में हम लोग सोचा था कि इस टाइम पर कोरोना वायरस का समय पर नरेंद्र मोदी जो अपने को चाय वाला कहते थे, कम से कम गरीब का बारे में सोचेगा। उन्होंने 65 रोज लॉकडाउन कर दिया था कि घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा।